So hey everyone, today we are having Ashutosh with us. He's having 2 years of experience as a statistical programmer, and Ashutosh is one of our first student. Now Ashutosh is going to share each and everything related to statistical programmer and about his 2 years of experience. So Ashutosh, first of all, can you introduce yourself? Hi everyone, this is Ashutosh, and I have been working in a clinical research organization for past 2 years, and I come from a mechanical engineering background. That is all about myself. Okay. So guys, I think Ashutosh, we already made a video, right? And 1.5 year and back, I think. So a Yeah. lot of things already in that video, guys. Also, you can check. I'll give the link. Now, Ashutosh, can you share like what is the day-to-day life work of a statistical programmer? You can start from the beginning, like once you got recruited in the company, what was the things for first 3 months or first 6 months? Starting, I was working in training studies only. You will be started with the some. You will be provided a training for the basis, and in that you will be assigned with a trainer, and he'll be teaching you some basic things like whatever the basis you will be learning in the initial. Most of the things will be repeated only, but it will be a kind of brush up for you. So whoever knows the SAS, in that they'll cover the most of the things where you require in future of in that company. So that trainer will be teaching you that base SAS and advanced SAS and a little bit of clinical SAS. So once you complete the training studies, then after like different companies have their different standards. So after the around 5 to 6 months, you'll be assigned to the real time projects. There you will be working in real time studies. So in the training part, have you ever felt the pressure like there was pressure of some given task to you and you're not understanding the things? Have you ever been in this scenario or the things were smooth in the training part? As I was already having some basic experience of SAS and basic knowledge of clinical SAS, so I would say this was not that much tough for me. But for the people who came from some like who didn't have that much knowledge of SAS, they felt some difficulty. But as you will be a part of team, so you can always approach your team members. They'll be ready to help you, and that is the best thing about the corporates. Like you can always approach your seniors, you can always approach your team members. They'll be always ready to help you. Along with that, you can approach your trainers as well. They'll be guiding you. And coming to the workplace, sir, it's like it won't be that much that you can't do in a day, but it will be like you will be occupied for the day. So it will be manageable. So then आशुतोष जब आप प्रोजेक्ट पे मूव हुए ट्रेनिंग स्टडीज के बाद Yeah. then what was the work? What is the first thing you did over there, like SDTM, Adam, table listing, or what was? So, where in the my first study, I was assigned with SDTM. So there, I had to start the coding. So जब भी आप coding start करते हैं तो like they tell you some basic things to remember while coding. So they'll tell you some guidelines how you should code, what things you should remember. So those things keeping in mind, I started my SDTM. So SDTM was the first thing I did in my real-time study. Okay. So how was the experience with the SDTM, the first experience? I would say it was quite good. I remember I did first time I think adverse event data set. So yeah, I would say it was quite good. You get to just after working for 6 months in training study, you get to see the real data and how the real data would look and how you would do the programming. So like it was a quite nice experience and knowledgeable experience for me. Now it's been 2 years, Ashutosh. So Yeah. what are the things you have worked on, like SDTM, Adam, specs, table listing? So Uh, you can in share in a series like what, like on SDTM you worked initially or specs and then after, or you worked on all those things over the time. So, like when I was moved to real time, I started with SDTM. So after completing the SDTM, then the things will go to the higher level. Like you will be assigned with atoms, then listings, then tables. Then once you have enough knowledge of the data flow, how the data goes from the raw data to tables and listings final level, then after
after some period of time you will be assigned with the spec creation. In that spec creation, I was having the in the starting itself, that spec creation will start once you are assigned with any project. Then you will receive the raw data. Okay, then in that raw data you need to see how the data is coming, and along with that you need to see the IG. And in seeing the IG, you need to do the spec creation. So that is also, it will give you an overall experience of how the whole data will be mapped to different domains. Once you are experienced in aspect creation, then you will get ACRF creation. So I was assigned with ACRF creation in one of the study. So in that we have to follow some guidelines and do the CRF creation. So those are the things like I have worked upon till now and over the span of 2 years. सो इन द प्रोग्रामिंग पार्ट, आपको प्रोग्रामिंग में कब ऐसा सिनेरियो आता है आशुतोष जब आपको ज़्यादा टाइम लगता है यूजली प्रोग्रामिंग में, या कहाँ आपको ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है और वहाँ पे शायद थोड़ी डिफिकल्टीज फील होती है? जो भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं, तो जो भी जैसे SDTM का कोई भी हम डोमेन अगर लें, सपोज एडवर्स इवेंट और डेमोग्राफिक्स, तो जो भी हमको स्ट्रक्चर बनाना है वो स्ट्रक्चर तो सेम ही रहेगा, बट ओवर स्टडी टू स्टडी हाउ द डेटा इज कमिंग वो मैटर करता है। लाइक वो अलग अलग होगा। समटाइम्स देयर इज अ टर्म एट डेटा इशू। समटाइम्स डेटा करेक्ट नहीं होता है, तो इफ द डेटा इज नॉट करेक्ट यू हैव टू सी द डेटा। इफ प्रोग्रामिंग करने के बाद भी अगर कुछ वैल्यूज प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, तो यू हैव टू रिपोर्ट दो डेटा इश्यूज ऑल्सो। देयर आर डेटा इश्यूज, then you might feel difficulty. Otherwise programming I would say is not that much tough. It is same only. So how you figure out the data issue? Let's suppose if someone is new to that, okay, he Yeah. mostly know the things like programming or Yeah. about SDTM atom, but he don't know how to figure out. So what is your first exposure like कि कब आपको पता चला कि हाँ ऐसे data issues होते हैं और मुझे हमें report भी करना होता है? I would say it comes with experience, but for the first timers who are doing the real time study, I would say we will define a data issue like you will see the final data set, and then you can see like these things cannot happen. आप कुछ data issues के बारे में बता रहे थे, तो हाँ बताओ। तो लाइक मैं एक सिनेरियो शेयर करता हूँ। ऑब्वियसली इट विल कम बाय द एक्सपीरियंस, बट सपोज वी हैव any date, any assessment, suppose vital signs or ECG examination, if it was performed on some date और वो date informed consent signed के पहले है, then it is a data issue. जब भी जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं उसमें सबसे जो फर्स्ट डेट होता है सब्जेक्ट का एंटर करने का, वो होता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट डेट। तो वट एवर द फाइंडिंग्स डेट वी आर गेटिंग, वो इन्फॉर्म्ड कंसेंट के बाद होना चाहिए। तो अगर वो उसके पहले है तो इट इज अ डेटा इशू। सो इट जस्ट एन स्मॉल एग्जांपल। ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी वेराइटीज ऑफ डेटा इशू। सो व्हेनेवर वी गेट दिस डेटा इशू, हमको उसमें इसको रिपोर्ट करना होता है। सो ये जो डेटा इशू का आप रिपोर्ट करते हो तो किसको करते हो आप? अपने टीम में किसी सीनियर को या किसी पोर्टल पे इंटरनली? हाउ इट इज? So like whenever a study start, there will be different kind of trackers will be created. Programming status tracker, something like that. So many status tracker will be there. So same like that, data issue tracker will be there. So whenever we face any data issue, हमको उस data issue को वहाँ पे enter करना होता है। So हमको जब भी कोई data issue मिलता है, तो वो that will go to DM team. DM team in every company, they have a data management team that will take care of the raw data and the issues related with that. So the tracker will go to the DM team and they'll resolve it. Once the data is updated, those issues will be gone. And Ashutosh, let's talk about an interesting part, that is salary. So we'll not ask the exactly salary, but can you range the salaries कि fresher के लिए market में क्या salaries चल रही हैं? And let's suppose if a person is having 2 or 3 years of experience, how much salary he can assume on this role specifically? I would say it varies company to company, but a freshers can expect above four. He can expect at least in a company. So after that, it's all depends on your interview. अगर आप interview जाता है तो recruiter will be wanting to have you on board. So it is all a part of your knowledge and interview. But if you are like 2 to 3 experience, then
you don't need to worry about the salary part. It is you'll get a nice salary. एंड 2 years में जो आपने काम किया आशुतोष, तो आपको कैसा लगा? जो चीज़ों जैसे हर इंडस्ट्री का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, राइट? सो क्लिनिकल इंडस्ट्री में काम करके आपको कैसा लगा? हाउ इज द एक्सपीरियंस विद इन दिस 2 years? I would say it was a quite knowledgeable experience. Get to work with the data. That is the treasure of today's world. So when you're working in the real time, then you always feel some that you are getting to learn new things. Whenever I was being assigned in a new study, uh, I was feeling happy, like I'll be working in a new kind of data, new structure of the data, and we'll learning new things. So yeah, it was a quite knowledgeable experience for me. Ashutosh, can you tell me like what are the educational requirements for this role? कि कौन सा एजुकेशन बैकग्राउंड होना चाहिए? इट्स मैथ्स और कंप्यूटर साइंस, फार्मेसी, कौन से लोगों को प्रेफर किया जाता है? जितना कि मैंने देखा है, लाइक मेरे co-workers, like they prefer all most of the technical fields, and along with the pharma sector, like if you are from pharma background, or you are from engineering background, so or maths background, they prefer all the technical backgrounds. So uh, if you have the knowledge, then your qualifications or your background comes the secondary. So it's all on your SAS knowledge and the clinical domain knowledge you have. ओके आशुतोष, व्हाट्स योर सजेशन फॉर फ्रेशर्स कि बिगनिंग में जब वो सीख रहे हैं तो उन्हें कैसे सीखना चाहिए, और एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग जॉब्स उनका क्या अप्रोच होना चाहिए? लाइक फोकस करना चाहिए कि जितना बेस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, बिकॉज बेस एंड एडवांस अगर अच्छे हो तो क्लिनिकल यू शुड, इफ यू हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ क्लिनिकल, दैट इज मोर देन ओके, बिकॉज कोई भी रिक्रूटर, दे डोंट expect you to have that much clinical knowledge, but they expect you to have a strong knowledge of base, because that is what you can learn. Clinical domain knowledge you will get when you are working on the real time. So always focus on the base test and the advanced test. And talking about the placements, if you have, you should focus on approaching the people. More people you approach, more the chances you will get, because nowadays freshers hiring there is are happening, like they're not happening like as openly. Like most of the, you should connect more people, you should approach more people, then only you'll get the chances of selection will be high. So here, till here it's fine. So Ashutosh, as we can see in the recent years, as this process is taking more time, what I Yeah. have seen by training multiple students or more than 400 students till now, that right now from past 1 year or 2 year, see, let's suppose a training duration is of 4 months. So another, on an average, another 4 to 5 months it is taking for getting interviews or cracking interviews. So on an average, it is around 10 months or 1 year. So Mm. what's your suggestion on this? First of all, we would like to know how much time it took for you. For me, I was quite fortunate that I started in June, and after 4 or 5 months, I got the placements. But nowadays, it is taking a bit long. So I would suggest to be patient and keep learning. And because nowadays demand is increasing, SAS, wherever you see, SAS is getting quite popular nowadays in the market. So eventually you will get it. You have to be patient and keep learning. सो गाइज, यहाँ पे अब हमें और सारे क्वेश्चंस नहीं मिल रहे थे जो हम आशुतोष से पूछे, तो आज के लिए हम ये लाइव डिस्कशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। बट नो वरीज, आप कमेंट्स में जो भी क्वेश्चंस हो, ठीक है, आपको जो भी डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो, कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन क्रिएट अनदर वीडियो विद आशुतोष एंड गेट द आंसर्स, ओके? और एल्स विल ट्राई टू आंसर इन द कमेंट एज वेल. Okay, if more number of questions are there, good amount of questions, proper questions are there, we'll surely ask again, we'll make another video. But right now we are out of questions. Why this happened, let me tell you that कि जब हम फ्रेशर होते हैं ना, तो हमारे दिमाग में आज से
5 साल या 4 साल पहले मेरे दिमाग में इतने सवाल थे, 400 लोगों के सवाल मेरे अकेले के दिमाग में थे। बट नाउ क्वेश्चंस उतने ज्यादा नहीं होते जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते हो। दैट्स व्हाई आई वुड लाइक टू नो द क्वेश्चंस फ्रॉम योर एंड एज वेल कि स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर रोल को लेके और क्या क्या क्वेश्चंस आपको लगता है या क्या क्या डाउट्स हैं, आप कमेंट्स में बता सकते हो, एंड विल मेक अनदर पॉडकास्ट। एंड सी, आशुतोष ही इज एन मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है? नॉट ओनली आशुतोष, अ लॉट ऑफ पीपल आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड and they are working in very good roles either in IT or any other industry. What I believe is there can be XYZ problems like कि आपको कुछ आगे बढ़ना है बट आपका एजुकेशन दूसरा है, आपको कुछ करना है बट आपका गैप है, या कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। बट व्हाट आई बिलीव कि इन टुडेज मार्केट, आज के मार्केट में जितना स्किल का डिमांड है उतना किसी और चीज का नहीं है। अब ये चीज तो सच है, दैट इज अ ट्रूथ, ग्लोबल ट्रूथ, कि देखो अगर आपका पास आउट ईयर 4 साल पुराना है, लाइक यू पास आउट इन 2017 18 और 19, यू आर अप्लाइंग फॉर जॉब इन 2023, किसी रीजन की वजह से गैप हुआ, अगर आप काम कर रहे थे किसी दूसरे रोल पे, दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो। बट अगर टोटली गैप है 3-4 साल का, ठीक है, तो आपका प्रोसेस थोड़ा लेंदी होगा, 1 ईयर और मे बी 1.5 ईयर, यू नीड टू मेंटेन पेशेंस। देखो अब इसमें किसी की गलती नहीं बोल सकती, कुछ प्रॉब्लम की वजह से आपका गैप हो गया, ओके? अब सबको सारी चीजें पता नहीं रहती, राइट? बट व्हाट आई बिलीव यू शुड हैव द क्लियरिटी कि अगर मेरा गैप है, मेरा बैकग्राउंड दूसरा है, तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा और मुझे थोड़ा सा ज्यादा खुद को शार्प करना पड़ेगा कंपेयर टू अदर पीपल in the market. But it's totally possible in today's market to crack interview, to get interview and to be in the company you want to work with. आज से 10-20 साल पहले that was not the case actually. The market was not that much open. But right now the market is open. Okay, but they cannot say this openly कि भाई हम कोई भी बंदे hire करते हैं, just come to us. You need to prove yourself, right? Okay, you need to prove. How you can prove that? See, that's a matter of fact that the company is paying you for the work you are doing and with the skills you are having. So company is getting the money for the work, and company is paying you money for the work, not for your educational certifications and not for other things. No doubt, having a relevant degree, a good score in your academic, that proves that you are a good learner, but it doesn't proves that you will actually perform very good in the further years as well, in the industry as well. Okay, that proves you have done great in your past. But again, whatever happened in your past, whatever background you are having, whatever gaps you are having, it doesn't matter. You can compete with anyone, okay? And but the only thing is skill and patience. Skill first, you need to have a proper skill, then consistency. You need to maintain the consistency in terms of learning. Let me give an example of Ashutosh. Whenever I have given a single task to Ashutosh, he have completed on time. Okay, I still remember I have given him the training 2 years back, and that is a quality. I believe the same. In the future, he'll be working great. I didn't know what was his academic marks because the time I trained him, okay, whatever I task I give to him, he have given the full attention. Okay, जैसे अगर आप को ये सीखना है स्टैटिस्टिकल, आई एम अ ट्रेनर फॉर दैट। मोस्ट प्रॉब्ली कंपनीज की प्रेफरेंस क्या होती है कि स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस या फार्मेसी, लाइफ साइंस और रिलेटेड डोमेन्स, आप समझ सकते हो इस रोल के, लाइफ साइंस, फार्मेसी, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, ओके, या सीएस, ऐसे बैकग्राउंड से, और एनी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। सो ये एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप खुद से सीख भी सकते हो। what I have seen, let me tell you a truth, 100 में से 2 ऐसे लोग भी होते हैं या 5 ऐसे लोग भी होते हैं जो खुद से सब कुछ सीख के जॉब भी ले लेते हैं। इट्स नॉट अबाउट द होल ट्रेनिंग पार्ट की आप कहीं से सीखो तो ही जॉब मिलेगी, दैट्स अ ट्रुथ। इवन आई टॉक टू सम पीपल जिन्होंने खुद से चीजों को किया है, बट अगेन वो खुद से करने वाले लोग बहुत ही कंसिस्टेंट होते हैं अपनी लाइफ में, बिलीव मी गाइस, बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट। दे आर वेरी मच प्लान्ड। सो वो हर किसी से नहीं हो पाता, बट स्टिल यू कैन लर्न बाय योर ऑन एज वेल। इफ यू फील कि आप बहुत ज्यादा, आपको पता होगा आप कैसे आदमी हो, मुझसे बेटर आपको पता होगा। सो मुझे क्या लगता है गाइस, ये 3 चीजें मैंने भी नोटिस की है। फिर पहली चीज, खुद को जानो। देखो आप हर XYZ पर्सन से वो मत कंपेयर मत करो, उसका सिलेक्शन हो गया मेरा क्यों नहीं हुआ, या उसका क्यों नहीं हो रहा। व्हाट डज इट मीन, क्या उसका नहीं होगा तो आपका भी नहीं होगा, और उसका हो गया तो आपका क्यों होना चाहिए। जस्ट फिगर आउट योर सेल्फ की मतलब आप कहाँ स्टैंड करते हो। डोंट जस्ट ब्लाइंडली कंपेयर विथ एनीवन।
जस्ट सी योरसेल्फ, क्या मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड रिलेवेंट है, क्या मैंने स्किल को टॉप नॉच तरीके से सीखा है, क्या मैं कंसिस्टेंसी से मेहनत कर रहा हूँ, क्या मैं अप्लाई कर रहा हूँ रेगुलरली, क्या अगर अप्लाइंग में कुछ मिस्टेक हो रही है तो मैं उस अप्रोच को चेंज कर रहा हूँ, मेरे फॉर्मेट्स को चेंज कर रहा हूँ। ओके, अगर क्या मुझसे टेक्निकल में मिस्टेक हुई, टेक्निकल में फेल हुआ तो मैंने इंप्रूव किया, क्या मेरे कम्युनिकेशन में कुछ इशू है, क्या मैं बिहेव सही से नहीं कर पा रहा। यू नीड टू फिगर इट आउट। There is two terms like question and answer. Every problem is having a solution. First, you need to figure out your problem and then solution. Are you having problem in learning? Are you having problem in practicing? Are you not consistent? What is the problem? Or if you are not getting interview, then the problem could be like this: are you not applying properly? Are you not applying in a consistent way? Is the format you are approaching to people, is not a correct way? You need to make some changes. And the very much important part is consistency. Believe me, guys, no matter what you are, a consistency can change your life. See, initially you won't love each and everything you are doing in life, but having a good career is very important. That changed my life. And having a good career is a human right. But you cannot blame anyone कि इसकी वजह से ये नहीं हो रहा, उसकी वजह से ये नहीं हो रहा। आपका करियर banana, bigarna, everything is in your hand. And do not compare with others. Simply learn a skill, focus on that, improve, you will get it. बस सीधा सा फैक्टर ये होता है कि अगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड रिलेवेंट नहीं है, गैप है, नॉलेज भी अच्छा नहीं है, कम्युनिकेशन भी अच्छा नहीं है, तो आपको टाइम ज्यादा लगने वाला है। बिलीव मी, दिस इज द रियल थिंग आई एम शेयरिंग। अब आप उससे जाके कंपेयर कर लोगे जिसका बैकग्राउंड भी रिलेवेंट है, जो जिसने अच्छे से कंसिस्टेंटी से मेहनत भी की है, जो सब कुछ अच्छे से कर रहा है, टाइम पे मेहनत कर रहा है, अच्छे से अप्लाई कर रहा है, तो गड़बड़ हो जाता है। एंड कहीं कहीं के लक फैक्टर भी काम करता है। कभी कभार ऐसा होता है कि किसी किसी को अर्ली डेज में मिल जाता है और किसी किसी को नहीं, बट लक फैक्टर व्हाट आई बिलीव कि कहीं ना कहीं वो बंदे ने मेहनत की होती है। So the efforts you put maybe in the past as well, you have put in a lot of efforts in the past but you didn't got the result. So sometimes you get the result suddenly, you feel like okay ये कैसे हुआ। So that's why do not compare। क्या पता वो बंदे ने पहले पास्ट में काफी मेहनत की तो अभी उसने थोड़ा सा पुश किया और वो एफर्ट आ गया। एंड whenever you see a person कि उसको लाइफ में बहुत जल्दी कुछ मिल गया बड़ा एंड उसकी लाइफ अच्छी चल रही है, तो do not get amazed by seeing person like this, people like this। Why? Because उनका डाउनफॉल भी उतनी जल्दी आएगा। जिसको बिना मेहनत किए, बिना नॉलेज के वो इंडस्ट्री में अगर जॉब लग भी गया है तो उसे जॉब लगने के बाद जो स्ट्रगल होने वाला है, द पर्सन इज गोइंग टू स्ट्रगल अ लॉट। इफ यू आर नॉट हैविंग अ नॉलेज, somehow you get an opportunity for working on any good roles, you're going to struggle a lot. That's why in the beginning, if you face challenges, you put a lot of efforts, so you become more deserving for that role, right? And finally, once you achieve it, you show your knowledge, you prove it, the same thing, that you have done your efforts part and you are having the knowledge and you respect your job. So comments में अपने क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। थैंक यू आशुतोष फॉर योर टाइम। सो Thank you. मिलते हैं Thank दोस्तों अगले लाइव सेशन में फॉर दिस स्टैटिस्टिकल थिंग। अगर आप चाहते हो कि वर्किंग प्रोफेशनल के साथ मैं वीडियो बनाऊं तो क्या क्वेश्चंस आप जानना चाहते हो या क्या चीज़ें, सो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई द बेस्ट। सो थैंक यू आशुतोष, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। Thank you, sir.